वेलकम टू योर सिटी पंजाब। एक बार फिर जी जी आए हो सारे मेरे मीडिया के मित्रों का। एंड हरनाज इज विद अस एंड चक दे फट्टे वाज अ मेन लाइन, सो लेट्स द मीडिया चक दे फट्टे वंस अगेन। ओवर टू हरनाज। Oh my god. सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। How are you feeling basically? कितना लग रहा है सबको पहला ऐसे आके लाइक चंडीगढ़ स्टेप इन कीता ਹਾਂਜੀ उसको लेके ਹੁਣ तक बहुत सारी मीटिंग लगता हो गई है की फीलिंग है सारा सी जानना चाहते हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਪੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋ ਹੈਪੀ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਰਾਊਨ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਟੂ ਮੀਟ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए कैसे आप वहाँ तक पहुँचे। So Harnaaz, how have you evolved from then to now? Well, Same question. Okay. Same question. Just wanted to आई थिंक शब्दों में कभी कभी बयान करना मुश्किल हो जाएगा कि मेरे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जो वो एक्सपीरियंस से जाता है उसको ही पता है वो कैसा महसूस करता है, उससे क्या सीखता है। पर मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। सो आई थिंक उन्होंने मुझे हमेशा शेरनी बना कर रखा है, तभी मैं आई थिंक आप सब मुझे शेरनी बुलाते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो कभी भी जैसे मुश्किल घड़ी जब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी तो गिव अप नहीं किया मैंने, ये सोच के कि यही मेरी ज़िंदगी की एंड है और इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। क्या होगा वो, गिर जाऊंगी मैं, फेल हो जाऊंगी, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। सो ऐसे ही आगे बढ़ती रही और आप सबके प्यार के साथ और दुआओं के साथ चक दिए फट्टे। बॉलीवुड वेल दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट ऑनेस्टली अभी मैं भी जीती हूँ यार। देखो 21 सालों के बाद इंडिया जीता है। So I'm focusing on being the spokesperson of Miss Universe organization and my advocacy about menstrual equity. तो उसके लिए अभी मेरा फोकस वही है। तो रेन के बाद बहुत लोगों को पता है, आपको पता ही होगा इसका जवाब, तभी आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो। उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है सर, बट द ओनली थिंग इज दैट अभी तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि आई थिंक जब ये रिलीज़ हुई उस टाइम पे मैं न्यूयॉर्क से मुंबई आई और तब से मैं अपनी होम कमिंग में आप सबको खुश देखकर मैं इतना बिजी हूँ कि मैं कश्मीर फाइल्स के बारे में अभी मैं कुछ नहीं देखा मैंने। तो मैं इसके बारे में अभी कुछ बोलूँगी दैट वोंट बी वर्थ। की मोमेंट की सिखाओ देख ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਟ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ। आई थिंक इट वॉज अ ड्रीम कम मोमेंट फॉर मी। उन्होंने मिल के मैं सर की बहुत बड़ी फैन है एज एन आर्टिस्ट, आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट टू, बट एट द सेम टाइम उन्होंने विजन देख के ते वो की बदलाव चाहते ने एंड यू नो अबाउट पंजाब along with so many other things like जे मैं अपनी गल करा जिदा मेरा फोकस इज अबाउट women empowerment and menstrual equity, right? So उन्होंने कितना दसिया कि कितना मतलब कितना कुछ वो पहला ही बदलाव लेके आ चुकी ने। आई थिंक इट्स ओनली बीन 12 days and he's ready for the change, and I was just telling him that the youth of our country, the youth of our state is all ready to change. They just want the right icon, the youth icon to make it like हाँ असी डायरेक्शन देवांगे थानू। So I'm really looking forward कि मैं भी उन्हां दा साथ कितना दे सकां एंड इस सोसाइटी ਨੂੰ इस कंट्री ਨੂੰ ਅਸੀਂ कितना हेल्पफुल कर सकीए। ते आई थिंक ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। सो इट वाज a beautiful and informative meeting with him. सारे जानना चाहते हैं कि मिस यूनिवर्स बन गई, टाइटल मिल गया, उसके बाद हुंदा की कुछ है वो सारे ना बहुत तरह सवाल है यार मिस यूनिवर्स की कुछ लोग आगे की कुछ
ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ I think personally जो कि ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ confidence ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ confidence ਮੇਰੀ vision clear ਹੋ ਗਈ I think ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ finally ਦਿਖਿਆ ਕਿ it's happening of course ਮੈਨੂੰ countries ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ I'm really looking forward in upcoming months and trying to go to as many countries with a lot of messages and to learn from that culture, that country. Shoots ho rahe ne kafi sponsors, magazines, a lot of meetings. I got to meet the great organization like Global Citizen and ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ and ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੂੰਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗੇ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਵਾਚ ਹਰਨਾਜ਼ ਜਰਨੀ ਐਜ਼ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ जैसा कि अभी आपने बताया that women empowerment है उसके बारे में बात करती है so I want to ask you like in every girl's life there has to be a moment जो एक breakthrough moment आता है so what was that in your life and what do you want to say to other girls I think it was many and I'm sure it's many with everyone we have different struggles we have different lifestyles we have different bodies and mindsets but हमारा vision एक ही होती है कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं इम्पैक्टफुल अपने लिए और सोसाइटी के लिए सो मेरे लिए आई थिंक प्री टीन्स में ही स्टार्ट हो गया था व्हेन आई वाज बुलीड द वे आई यूज्ड टू लुक बीइंग टू थिन एंड आई थिंक जब मैं मिस इंडिया में थी 2019 में मैं सिर्फ 19 साल की थी और मुझे स्टेज पे एक क्वेश्चन पूछा था और मुझे जवाब नहीं देना आया उस टाइम सो वो मेरे अंदर एक आग जली कि मैंने अपने आप को अपने आप से प्रूव करना है कि आई वाज रॉन्ग कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस और आर्टिकुलेट करने के लिए तो जब मैं इस बार आई मिस टीवा के लिए मैं ये सोच के नहीं आई कि मैं जीतना चाहती हूँ ना ही मिस यूनिवर्स में मैं ये सोच के आई कि आई एम माई ओन कॉम्पिटिशन और मैंने अपने आप से जीतना है और अपने आप को हराना है कि नहीं वो हरनाज चेंज हो चुकी है उसने अपने फेलियर से सीखा है वो आगे बढ़ चुकी है और जब तक मैं अपने आप एम्पावर्ड नहीं फील करूँगी तो मैं लोगों को कैसे एम्पावर्ड फील करूँगी सो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन हाँ जी सत श्री अकाल सर ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੂਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ कि कितना मैं सर का साथ दे सका एंड अपने प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सका एंड पंजाब में कुछ खास कर सका क्योंकि मैं पंजाब की थी ना सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट थैंक यू आई थिंक यू हैव बीन वेटिंग यस ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊ ਯੂ ਲੁੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਲੇ oh my god I'm so happy you asked me that question. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ I knew it because that's the stigma in our minds. I mean ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੋ but ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ I mean I'm one of those individuals ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਟੀ ਆ like nobody knows about my celiac disease कि मैं आटा नहीं खा सकती बाकी भी बहुत चीज़ां ने एंड वैसे भी तुसी किते होर शहर च वसोगे ना तो थोड़ी सी चेंजेस आने लग पेंगे तुसी पिंड जाओगे ना हुणे है अपने आप अपनी बॉडी से चेंजेस आएंगे मैं तो न्यूयॉर्क पहली बार गई हूँ पूरा दुनिया दूसरी दुनिया च मैं गई हूँ you know because I am a person who believes in body positivity and one of the Miss Universes for the very first time is going through that and we at the platform of Miss Universe talk about women empowerment, womanhood and body positivity and if I am going through that I know that a lot of people who are trolling me because that's their mindset, their stigmas but there are a lot of other individuals who are trolled every day irrespective of if they are Miss Universes or not and I think I am empowering them by making them feel that if I feel gorgeous you are beautiful too. It's in our minds how we perceive beauty.
For me, everyone is beautiful. It's about how you represent yourself and what kind of ideology you have. Your features does not matter at one moment. And trust me, if you think that I'm the most beautiful girl, that's why I won Miss Universe, I'm sorry, you're wrong. I might not be the most beautiful, but I might be the one of the courageous and one of the confident girls who believes even if I'm fat, even if I'm thin, it's my body. I love myself. I love the changes, and you should appreciate because not everyone can go through the changes. So be happy if you're going through changes. आपकी ज़िंदगी में challenges आ रहे हैं, you should be thankful क्योंकि इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है कुछ. So डट के रहो. आप 3 महीने घर से बाहर रही, घर का खाना जो मिस किया है उसके बारे में बहुत किया है. आज मैं जाके खाऊंगी जल्दी. मैं तो न्यूयॉर्क में भी मक्की की रोटी और दाल मखनी बनाना शुरू कर दी है, पर घर जैसा खाना कहीं भी नहीं मिलता. बट दिस इज़ हाउ इट इज़. आपको अपनी कंफर्ट जोन से कभी कभी बाहर आना पड़ता है अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो. सो थोड़ी हार्डशिप होती है कि मुश्किल लगता है मुझे कि न्यूयॉर्क में से खाना नहीं है, बट it's okay. You're doing so many other better things, so always have a positive outlook towards everything. Yes, ma'am. It's very difficult when you become a celebrity. People tend to not speak on the I think being the youth of my country, and I'm a student of a master's in public administration, it's important to have your perspectives about anything that's happening around the world. And during that conversation, he was asking me a lot of related questions, and I was like, hey, ask me about my journey also, because I also have so many stigma, stereotypes. It's about pageant holder, it's about just looking beautiful. So that was something which I felt like, no, I need to speak about that because anyway, the girls are getting targeted. And there are so many people who say that you are supporting hijab. And I think I just gave my perspective to it. And in the end of the day, if that girl is dominated by the patriarchy system, or if that girl is wearing hijab, that's her choice. Even if she's getting dominated, she needs to come and speak. Unless she doesn't support herself, how can I support her? And that's her choice, then that's her choice. Let her live the way she wants to live. So in both ways, she needs to come and speak about that. It's my choice, or I'm getting dominated, and I need to stop. And I'm there to support. And that's all about it, because we are women of all colors. We are women of different cultures. We need to respect each other. Let them live the way they want to live. And I think we all have different lives, so why do you want to pressurize somebody and dominate somebody else? That's all what I think. Perspective, I said. Everyone has different perspectives and we should listen. Thank you. How do you think that pressure Change after winning Miss Universe. Me as Harnaaz is the same. Thodi choti ji pyari ji kudi is the same. But my vision has been clear. I've been more confident about what I need to do. And people have a lot of expectations with me. And I think that's genuine. Because not everybody gets the opportunity to speak, to sit, to be the voice, and to spread awareness and break stigmas. So I'm really thankful and grateful to be sitting here and talking with all of you, and to make sure that whoever is still struggling with those stigmas, we need to break it together. during Miss Universe या Miss India स्पोर्ट बनती है तो बड़े-बड़े प्रोडक्शन शुरू हो जाते हैं. आप 3 मंथ से जरिए बताइए कि इनके प्रोडक्शन क्या बनते हैं और अच्छी बात है. आई थिंक मैंने सबसे पहले मेरा फोटोशूट फेब्रुअरी में हुआ था फातिंदर के साथ. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स इन द वर्ल्ड. तो उनके साथ मैंने अपना न्यू फैशन देखा, न्यूयॉर्क फैशन मैंने स्टाइल देखा कि मैं ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ. सो आई थिंक न्यूयॉर्क जाने से मैंने ये एक्सप्लोर किया कि ग्लोबली फैशन कैसा है और हम कितने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. वहाँ पर जाके भी मैंने काफ़ी इंडियन डिज़ाइनर्स डाले, साड़ी भी डाली, एंड इट वॉज रियली नाइस. एंड काफ़ी फोटोशूट्स किए हैं आगे भी. इट्स गोना बी वेरी एक्सपेरिमेंटल एंड ब्यूटीफुल. हरनाज़, आपका लैक्मे फैशन वीक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज इतने बड़े मंच, ऑफ कोर्स यू आर अ मिस यूनिवर्स, लेकिन
में से एसोसिएट रैंप वॉक करना वो कैसा था? मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहली बात तो शेयरिंग द स्टेज इन दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट टू विद शिवन एंड Wraich. दे हैव बीन रियली क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि वो ज्यूरी पैनल में थे मिस टीवा के टाइम पे, और दिस वॉज माई फर्स्ट शो स्टॉपर मोमेंट एज मिस यूनिवर्स। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड स्पेशली मैम बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में जो मैम ने क्वेश्चन पूछा, सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग फॉर मी। आफ्टर बॉडी पॉजिटिव के बाद मैंने पहली बार लैक्मे फैशन वीक पे ऐसी ड्रेस डालकर वॉक किया। सो इट वॉज नॉट ओनली एम्पावरिंग अदर्स, एम्पावरिंग माई सेल्फ विद इन टू एक्सेप्ट द चेंज, बिकॉज आई नो इन द एंड ऑफ द month, year, or whenever, I will get back to shape. I need not to prove anyone. I need to prove myself, and I'm happy. I love myself, respect my body, and I'm grateful to have a great body. आप मिस यूनिवर्स बने उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, तो वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और कैसे निभा रही है उसके बारे में? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने पहना है क्राउन, और वो क्राउन इज रिस्पेक्ट, the crown is courage, the crown is voices of so many people who are voiceless right now, and the crown is breaking stigmas. तो इतनी responsibilities है यार, वो जो मिस यूनिवर्स सबको लगता है it's about being perfect, it's not that. We all are imperfect and we need to embrace that. So there's so many responsibilities. I think सबसे बड़ी responsibility है यूनिवर्स की, तो I hope मैं अच्छे से निभाऊँ। कॉलेज की शुरुआत की 2017 से, किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, टीचर्स का किस तरह का सपोर्ट रहा, वो आज भी आपको याद करते हैं, किस तरह का उनका रहा, क्योंकि जैसे उनकी बोलना है, हाँ जी, दिल्ली की आवाज़ निकालना, मोमेंट्री करना, वो बहुत बढ़िया थी आपकी, वो कैसा रहा, और आप आज उनको अपने साथ ड्राइव करते हो, लगता है आपको उनकी बदौलत आप यहाँ तक आए? टीचर्स ने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कहते हैं ना जैसे वो आपके सेकंड पेरेंट्स होते हैं, तो मेरे लिए हमेशा वैसे रहे मेंटोर्स, प्रोफेसर्स। तो हाँ जी, मैंने 2017 में मैंने अपनी बैचलर्स शुरू की थी, और मैं थिएटर आर्टिस्ट, मैंने जो अपने थिएटर की जो क्लासेस है मैंने वहाँ से एक्सप्लोर किया कि मैं एक एक्टर भी बन सकती हूँ, मुझे इस चीज़ का शौक है, और वहीं से मैंने रैम्प वॉक स्टार्ट किया अपना, जब मैं जस्ट 17 ईयर्स की थी। और मुझे याद है जब मैं मिस टीवा में थी और मैं प्रिपेयर करती थी, मैंने टैलेंट अपना शुरू किया था एज मिमिक्री, तो मैंने मम्मी किए थे जजेस। तो मुझे याद है जब मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मिस टीवा, सो माई मेंटोर सुप्रीत बेदी, उन्होंने मुझे कम्युनिकेशन के वो स्किल्स सिखाते थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मिमिक्री करना और एक्ट करना। तो मेरे को पहले लगा सो ऑकवर्ड, बट इन दैट वे आई थिंक आई गॉट टू broke so many stigmas, and I did that in the interview, personal interview, और मुझे नहीं पता था कि वो स्टेज में मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, और जब मुझे पूछा तो और स्टीव के साथ खड़े होके जो स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी है, तो मैंने कहा अब मौका मिला है तो अपना टैलेंट शो करो, क्योंकि मेरे टैलेंट ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं उसको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूँगी। सो आई एम थैंकफुल कि मुझे मौका मिला कि मैं कुछ लोगों को हंसा सकूँ और स्टिग्मास ब्रेक कर सकूँ कि ब्यूटी पैजेंट में यही नहीं कि आपको लाने के लिए सबसे पहले खुद की चेंज करने की जरूरत है। और यू थिंक अ पर्सन नीड टू चेंज इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हाँ जी, यू नो फॉर सोसाइटी एट दैट। बिल्कुल, absolutely. The change starts from within. And if you want to change the system, if you want to change something about anything around you, you need to be in that system. But only if you are empowered within, then only you have the perspective. Then only you are confident about what you say, and you know that this is me and I'm authentic and I have people to support me. So starting हमेशा मुश्किल होती है, but impossible नहीं. And I think ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी जो जर्नी है, you have become an idol for so many young people, especially coming from the culture. But there is a fear of exploitation. How real do you think is this fear of exploitation? I think you asked a very valid question. This is true. Like my family was there to support me, so I think they saved me a lot.
to feel protected. पर मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों को स्पेशली इस इंडस्ट्री में अगर आना चाहिए तो दे नीड टू ट्रीट देमसेल्व्स द वे दे वांट पीपल शुड ट्रीट देम. अगर आप अपने आप को कमज़ोर ट्रीट करोगे तो लोग आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे. इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड कॉन्फिडेंट इनफ टू represent yourself, people will talk to you accordingly and they will think so many times for asking you anything. So you need to have that ज़िद्दी दिल जज्बा, वो स्ट्रॉन्ग representation of personality. वो आपको अपने आप रखनी पड़ेगी. You need to be very strong from within, and that's how people are going to receive you. मैम इस यूनिवर्स बनने के सफर में सबसे मुश्किल टाइम कौन सा था? Oh my God, सबसे मुश्किल टाइम तो आई थिंक मेरी मिस्टीवा ऑर्गेनाइजेशन को पता है. 30 दिन थे हमारे पास प्रिपेयर करने को और इतना ज़्यादा होती थी और रात के 12 बजे सोती थी 30 दिन के लिए. मेरे साथ पूरी टीम भी, मैं तो ये कहूँगी मैं फिर भी 1 घंटा 2 घंटा सोती थी, मेरी पूरी टीम सोती नहीं थी. पर मेरे अंदर था कि मैं करना चाहती हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, क्योंकि मेरे साथ इंडिया का नाम जुड़ चुका है. और मैं नहीं चाहती कि जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ ऐसा उनको लगे कि शी इज़ नॉट सीरियस. और ऐसा है इंडिया जो नहीं है. इंडिया इज़ सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, डाइवर्स कंट्री, और कितने कल्चर्स, और आप सबको रिप्रेजेंट करने का वो जो आँख थी मेरे अंदर, तो आप सबका प्यार था. So that's why I never gave up. So that was the most difficult time of my life, I think, along with my health. और जो gluten ये सब नहीं खा सकती थी. So it was kind of very challenging for me, but with your love and support, I never gave up. हरनाज़, आप हाल ही में इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गए थे. हाँ जी. और उसके एक्सपीरियंस में उसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन उसी के साथ आपके फैंस को वो वीडियो जो है वहाँ दिखाए, जो आपके फैंस कह रहे हैं कि हमारी हरनाज़ को वैसा वार्म और वैसा प्यार नहीं मिला, इसके बारे में आप क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है. मुझे इतना अच्छा लगा उन सबके साथ मिलकर, मनोज जी से मिलकर, बादशाह, शिल्पा शेट्टी, करण खेर मैम, उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे उनके साथ मिलकर. आई वाज फीलिंग रियली हैप्पी एंड इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू मीट देम इन पर्सन एंड टू लर्न सो मच. So it's nothing like that. I think people they don't know what's actually happening. जो सोशल मीडिया पे हम दिखाते हैं वही सब कुछ नहीं होता है. So ऐसा कुछ भी नहीं है. It's just I don't know why people say that. It's so warm. हरनाज़, अभी आप ग्लोबल सिटीजन हो, तो ग्लोबल सिटीजनशिप में आती है प्रियंका चोपड़ा, क्या उनसे मुलाकात करने का मौका मिला? अभी नहीं मिला, but I'm really looking forward to meet her. वो भी अपनी लाइफ में कितने बिजी हैं अभी, but I think looking forward to meet her. I live in Manhattan, so that would be. And I think I really can't wait to meet her and learn so much. I think मैं इंसान ही बनना चाहूँगी in the end, क्योंकि कभी कभी आपको एक इंसान बन के भी सोचना चाहिए. Like it's not only about Miss Universe है, हरनाज़ एक इंसान भी है, और वो एक इंसान होकर कैसा सोचती है सोसाइटी के लिए, वो बहुत ज़रूरी है. So if given a chance, I would like to be a human before anything else. Okay, in that way, I think IS also. That was my plan B anyway. हाँ जी. हाँ जी. ਤੁਹਾਡੇ फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब डेफिनेटली कभी मैंने ਹੁੰਦਾ कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ नॉर्मली, इंजॉय करना चाहती थी, तो अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड, चलो फैमिली में होने मिली है वैसे ही इन जनरल. बट आई थिंक आई लुक एट द अदर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस सिचुएशन. आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका मिला, क्योंकि सबको नहीं मिलता ये मौका, तो इसको एम्ब्रेस करना चाहती हूँ. और ये जो अटेंशन है, ये जो इतना प्यार है, उसको मैं अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहती हूँ. सो कभी कभी मुश्किल होता है, बट आई एम हैप्पी इन द एंड ऑफ द डे कि हाँ ठीक है, कितने होप्स है सबको. सो दिस इज टाइम टू शाइन एंड मेक थिंग्स हैपन. एंड द गर्ल्स इन पंजाब, आई थिंक मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि
अगर मैं करके दिखा सकती हूँ तो आप भी करके दिखा सकते हो। मैं वहाँ हूँ जहाँ आपको मेरी सपोर्ट है, बस इतना ही चाहते रहो फटे एंड डरना नहीं है एंड डू व्हाट यू बिलीव इन बिकॉज दिस इज योर लाइफ, मेक इट हैपन। थैंक यू। मिस यूनिवर्स थैंक यू। मिस यूनिवर्स कई इनविटेशन आपको लाते हैं, तो कोई ऐसा एक इनविटेशन है जिसके आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिस यूनिवर्स मिलने का मौका मिले, जो वैसे नाम इसका? आई थिंक जब से बनी हूँ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड इन्विटेशन आए हैं मेरी लाइफ में। आई मीन मिस यूनिवर्स के साथ हमेशा होता है, मिस यूनिवर्स जब बनती है, सो इट्स रियली such a surprising moment for me whenever my team tells me that we are going there, we're doing this, and I'm like, wow. Incredible visuals to do that. स्पेसिफिक इनविटेशन जो आप एक्सपेक्ट करें या मिलना चाहते हैं आया होगा? They're long list. You have to wait. You have to wait and just stay updated on my Instagram. मैम 20 इयर्स लगे इंडिया में से टाइटल और मिस यूनिवर्स का, कौन भी लगता है इतना लंबा टाइम पीरियड क्यों लगा इंडिया में से टाइटल? आई डोंट नो यार, मैंने पता ही नहीं है, बट मैं यार कहूँगी कि हर कुड़ी ने जब भी उन्हें इंडिया में रिप्रेजेंट किया उन्होंने बहुत मेहनत की है। सो उन्होंने सारे ने मेहनत करके अज असी बने, मैं नहीं असी बने, क्योंकि उन्होंने सारे ने हर साल उन्होंने दिखाया कि इंडिया मतलब कि डिजर्विंग है क्राउन वास्ते, कि मेहनत करता है, कि टैलेंट है कि इंडिया च। सो आई थिंक उन्होंने करके ही अज असी क्राउन जितया है, सो उन्होंने सारा की मेहनत है, सो आई थिंक उन्होंने क्लैपिंग बनती है। Women empowerment, I think it's about empowering yourself and empowering women of all colors, women of different cultures, and representing, I think it's all about womanhood, ठीक है? और आप कैसे ब्रेक करना चाहते हो स्टिग्मास जो women के related है। For me, it's about whether it's in your profession, whether it's in your community, society, or the whole globe. Do you think that feminism has anything to do with women empowerment? Because I think most of the people in India, if you talk about women empowerment, they definitely tag you as a feminist. And I think it must have happened with you because with me it has happened an n number of times. So if you can just share a little incident about it, I'll be more than glad. I haven't, to be very honest. I make sure that every word that I say is clear enough to focus on women empowerment. And I share my personal story, how my mom broke the patriarchal system by being a gynecologist, how I, after winning the beauty pageant, broke the stigmas regarding that, and how I, went to represent this beautiful country, met incredible women from all around the world, from all around the cultures, and women of all color. I realized that it takes a lot of courage to bring that one difference, and we are here with one motive. So feminism is a different term. Women empowerment is a different term, and I talk about women empowerment not because कि हम एक competition है हमारा men के साथ. We want men to support us. It's about respect and it's about equity. We need everyone to be treated equally, not as genders, as humans, and as skills, and as emotions. So feminism is totally different. I never ever touched that thing because I don't believe in that. I believe in women empowerment, empowering individuals. Thank you. Harnaaz, जैसे कि आप चंडीगढ़ hometown वापस आई हैं, तो anything? Okay, I can't hear both of you. हाँ जी, I think आज CM सर से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर. So I'm really looking forward कि मैं पंजाब के लिए क्या क्या कर सकती हूँ. So it's unlimited and there's so many things regarding drugs, menstrual equity, women empowerment, and we can do so many incredible things. So definitely I need you guys to support. Thank you. Harnaaz, जैसे hometown वापस आई हैं, तो कोई particular खाना या कुछ ऐसी जगह जहाँ जरूर जाना चाहें और चखना चाहें स्वाद? अमृतसर दी लस्सी, अमृतसर दे पापड़, ते छोले भटूरे मैं खा नहीं सकती हाँ, पर I think गोल्डन टेम्पल का प्रसाद. And चंडीगढ़ में I think काफ़ी कुछ खुल गया है, 6 महीने हो गए मुझे, बट चंडीगढ़ में I think मैं मम्मा के हाथ के खाना खाना चाहूँगी और थोड़ी और मे बी सेक्टर 17 इधर. मुझे मौका नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ, बट मुझे. थैंक यू.
No. Because normally आजकल all the artists are coming. It's choices, and I choose no. I would choose to be empowering, having my voice about the happenings, the administration, by being the youth. But I am good. Just to compliment Harnaaz, from the last press conference before you were going for the pageant to now, I think your confidence is wonderful. Thank you, and it's due to you guys. You are so sweet, and you have always supported. I've been watching you guys on Twitter, Instagram, and I'm really thankful. सच्ची दिलों शुक्रिया. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी, हमारी मूवी आ रही है बाईजी कुत्तन डे 27 मई को. वो अभी इसका नहीं पता, बट ये जरूर आ रही है पहले. ये स्लेटेड है. इट्स डेफिनेटली हैपनिंग. जो डायरेक्ट की है समीर सर ने और प्रोड्यूस की है उपासना सिंह जी ने. देव सर है वहाँ पे उसमें, और कुकी सर भी हैं. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप सबको देखने का मौका मिलेगा. मी एज एन एक्टर एंड एज एन आर्टिस्ट. So I'm really looking forward to it. The other movie is still not stated, so this one is definitely, so go and watch soon. Just a request, get a picture done with us, like, Yes, of course. Okay. Okay, one last question, I think. Perfect. 1 second, sorry. यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब आपको बहुत पसंद है, राइट? द वेरी अट्रैक्टिव. सो ऐसी क्या क्वालिटी है कि आप किसी सामने वाले में देखना चाहते हैं कि वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती है? I think being authentic. Very important to be original, very important to be humble and grounded, because that can take you places. And for me, it's about how you treat everyone, irrespective of their class, how you treat everyone. And वही मेरा दिल जीत जाती है. So thank you for that question. Thank you everyone. हाँ जी.